Now you're on YouTube live. Keep quiet. So good morning, everyone. This is BBM second year, and we are taking up chapter 7 onwards, multiple choice questions for annual farm. Try to answer the question in your books, your copies. Chapter 7, question number 1. Animal Farm, chapter 7, question number 1. How does Napoleon get the hens to lay eggs for him to sell? Now, Napoleon wants to sell the products of the animal farm. Okay. So, how does he convince the hens that they have to sell eggs? He increases their food rations. He gives them no food until 9 die and the others agree. He gives them no food until 9 hens die because of hunger. He said that we have to sell the eggs, but the hens refused. The story says that the hen said, no, we will not sell. हम लोग बेचेंगे नहीं अपना. और इसी में the hens rebel करते हैं और लोग भूख हड़ताल नहीं खाना खाएं, नहीं खाने की वजह से, और उन लोग को खाना भूख हड़ताल नहीं, उन लोगों को बोलता है कि जब तक तुम लोग अग्री नहीं करते इस बात के लिए, तब तक तुम्हें फूड नहीं मिलेगा. तो नहीं बोल रही थी, हेल्थ लोग अग्री नहीं करेगी, जिसके वजह से नेपोलियन लोग खाना बंद कर देता है कि जब तक हाँ नहीं बोलिएगा आपको खाना नहीं मिलेगा. इसी दौरान 9 हेन्स का भूख से डेथ हो जाता है. Understand? So this is the right answer. Until 9 hens die because of hunger. What do the animals decide to do about rebuilding the windmill? They want to rebuild the windmill. So, what happens? Sorry, क्या बताता है? Tell me. You have to read the complete analysis. Anyone tell me the story? कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, क्या हुआ था?
आंसर बताओ क्या, ऑप्शंस बताओ। they decide they decide not to rebuild. They decide to hire human workers to rebuild. They decide to work all winter and make it twice as thick. They want for Mr. Wimper to tell them what to do. ठीक है, वो लोग पूरे विंटर काम करके और फिर से उसको फिर से रीबिल्ड, they try to rebuild the windmill by working all winter. They did not take a break and they were working really hard. Question number 3. What does Squealer tell the animals about Snowball? Squealer was a propagandist and Snowball was the pig, who was very intelligent and who was chased out of the animal farm. Now, what does the Squealer tell the animals about Snowball? He was a true hero and he is sorry for what he did. He is living at Mr. Jones and planned the Battle of the Cowshed. He is not as smart or handsome as Napoleon, even though he says he is. His windmill design was inferior and cost all animals months of extra labor. Right answer B. वो ये रूमर फैला देता है कि वो जोन्स के साथ मिला हुआ है और वहां से बैठ करके वो is working against animal farm and he has planned the cowshed battle. Hey, what is this cowshed battle? Tell me. Cowshed battle क्या? First battle was what? When Mr. Jones को भगा दिया गया था, chase करके, right? तो मिस्टर जोन्स जिसका इतना बड़ा एनिमल फार्म था, तो क्या एज अ ह्यूमन बीइंग वो क्या इन जानवरों से डर जाता क्या? तो he tried to attack, he tried to get back his animal farm और वो हमला करने, he attacked the animals to get the power back. इसी बीच दोनों भिड़े थे, मिस्टर जोन्स एंड इधर से एनिमल्स, जिसमें all the animals उसको फिर दोबारा से उसको क्या किए थे? Chased him away. Mr. Jones was unsuccessful in getting back the animal because the animals had once again chased him away. और इस बैटल को कहा जा रहा है काउशेड बैटल. अब ये प्रोपेगेंडिस्ट जो स्क्वीलर स्क्वीलर बताता है एनिमल्स को बिकॉज स्नोबॉल का जो फेस वैल्यू था, he was very popular among the animals because he was doing good. एक अच्छा, he represents a good politician who thinks of the welfare of the people. और जिसकी साजिश करके, सावटाज करके नेपोलियन उसको भगा देता है पहले, और उसके बावजूद भी वो ये रूमर स्प्रेड करता है कि ये जो बैटल ऑफ काउशेड जो शुरू हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ नेपोलियन, ऑल बिकॉज ऑफ स्नोबॉल. वो जोन से मिला हुआ है और उसको मदद कर रहा है और काउशेड का बैटल उसके वजह से.
तो दिस वाज द बैटल ऑफ काउशेट। और स्क्विलर जो था, मीडिया पर्सन ऑफ नेपोलियन, वो सारे एनिमल्स को भड़काता है अगेंस्ट स्नोबॉल, that he is, even after he has left animal farm, he is trying to damage. तो ये रूमर था। Number 4. What happens to the animals that confess to being in league with Snowball? उन जानवरों का क्या हुआ जो कन्फेस करते हैं, जो इस बात को अग्री करते हैं, एडमिट करते हैं कि हाँ हम लोग स्नोबॉल के साथ। क्या करता है नेपोलियन उनके साथ? दे आर फोर्स्ड ऑफ द फार्म, मतलब भगा दिया जाता है उनको। दे आर मेड सर्वेंट्स टू द पिग्स, they are killed by the dogs, they are put in a pen, and pen that is now the farm's prison. क्या? Anybody who goes against Napoleon, नेपोलियन के अगेंस्ट जो भी आवाज उठाता है, हाँ उसका जो 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 सिक्योरिटी जो गार्ड्स था उसका, दे आर किल्ड। In this situation, there was the 2 young pigs जो रिप्रेजेंट करते हैं youth of the society. So 2 young pigs spoke against Napoleon, और जिसको immediately he was killed as a lesson for the other animals, कि तुम लोग भी मेरे खिलाफ बोलोगे तो तुम लोगों का भी हश्र यही होना है। So anybody who spoke against Napoleon was killed by the dogs. Question number 5. What happens to the song Beast of England? It is cultivated and replaced by an uninspiring song. इसको replace कर दिया गया। The animals suddenly forgot the words and now they can no longer sing. Humans start singing it as well. It falls out of favor with the animals despite the pigs' insistence that they sing. Pigs ने मना, pigs उनको बोलते थे कि तुम लोग गाओ, लेकिन despite उनके pigs के कहने पर भी animals refuse to sing. Your answer is wrong. Answer is A. It is cultivated and replaced. Cultivate होता है और replace हो जाता है, मतलब दूसरा word आ जाता है। Animal Beast of England बिल्कुल से खत्म हो जाता है। हाँ, and it is replaced by a very uninspiring song. Chapter 8, question number 1. Chapter 8. What is the commandment? No animal shall kill any other animal. Changed to. सेवेंथ कमांडमेंट जो था तो उसमें ये था ना, एक वही था
that no animal shall kill any other animal. इसको क्यों उसको बदल दिया गया था बिकॉज वहां एनिमल्स देख रहे थे कि एनिमल्स आर बीइंग किल्ड. तो तुम रूल क्यों बनाए हुए हो और तुम यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ एंड यू आर द रूल ब्रेकर्स. The rule makers became the rule breakers. So what happens? What is it changed to? So what is the commandment? No animal shall kill any other animal. Change. Bad animals observe to die. Sorry. Bad animals deserve to die. ये slogan था? नहीं. No animal shall kill any other animal ever. ये था? नहीं. Death to animals. ये था? नहीं. No animal shall kill any other animal without a cause. मतलब they were trying to, Napoleon was trying to justify whatever the work was doing. So no animals will kill any other animal without a, that was a clause over there which he had put. What does Snowball want to, 1 minute. What does Snowball want to sell to either Mr. Pilkington or Mr. Frederick? Snowball क्या बेचना चाहता था? What does Snowball want to sell to either Mr. Pilkington or Mr. Frederick? Eggs, puppies, a pile of timber, a melted corn. That is timber, pile of timber. ठीक है, a pile of timber. What does Napoleon discover about Mr. Frederick's payment? क्या डिस्कवर करता है नेपोलियन about Mr. Frederick's payment? What does Napoleon discover? Napoleon was trading with Mr. Pilkington all the time. कभी eggs बेच रहा है, कभी timber बेच रहा है, कभी कुछ करता था. So what does Napoleon discover about Frederick's payment? He sent a check instead of cash. It is fake money. It's twice as much as expected. The suitcase of cash explodes when he tries to open it. Option D is it explodes. No, नेपोलियन को पता चलती ये बात है कि जो फ्रेडरिक का पेमेंट हो रहा है दैट इज फेक मनी. What do Mr. Frederick and a group of men do? Frederick और कुछ ह्यूमन ग्रुप वो लोग क्या करते? ये वाला जो है ये जो क्वेश्चन है ये विंडमिल बनने से पहले क्या करते हैं? बाद जब विंडमिल बन गया था उसके बाद इन लोगों ने क्या किया? ब्लो अप द विंडमिल, bring the military to help them to slaughter the animals, offer to work with the animals, burn down the barn and farmhouse. They blow to come on again. Okay.
Why do the pigs add to excess to the commandment, no animal shall drink? अब उसमें था ना जैसे नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल, उसमें वो क्या चीज ऐड कर देते हैं? Why do the pigs add to excess? मतलब ज्यादा पीना है लेकिन एक्सेस नहीं पीना है। वो लोग अपना हर एक कमांडमेंट में रेक्टिफिकेशन करते जा रहे थे, तो क्यों वो बोले कि एक्सेस का वर्क डाल दिया गया, पियो लेकिन ज्यादा मत पियो। ये हेलो, these things concern you, यूट्यूब लाइव पर है तो इससे क्या हुआ, बाद में देख लेंगे, अभी देखो। I will turn the camera to you students. एक्सेस क्यों लगाया गया था? नो एनिमल शैल ड्रिंक एक्सेस अल्कोहल, एक्सेस वर्ड क्यों लगाया? ऑप्शन, in case the other animals were confused about how much they could drink. Because they tried drinking whiskey and planned to drink more. The police told them they couldn't drink outright. And Napoleon paints that on the barn when he is drunk. Excess पे क्यों लगाया? Answer is B. Because they tried drinking. इसलिए कि बाकी एनिमल से पीना शुरू कर दिए थे और they wanted to drink more. Your score is not that good. Now tell me what will happen. Chapter 9. एक बार आप पढ़ लेंगे अगर ना, यू कैन चेक इट आउट ऑन यूट्यूब लाइव। भूलेंगे कैसे आप? वहां से डाउनलोड भी कर लीजिएगा, तो आंसर सामने है आपके। As food rations grow smaller, what does Squealer tell the animals? खाना धीरे धीरे कम हो रहा था, क्या बताता है स्क्वीलर एनिमल्स को? That times are tough and they must work hard. Band together का मतलब होता है वो लोग बिल्कुल अब एकजुट होकर के काम करेंगे, मतलब we have to be one. They might all starve to death. क्या कहता है कि हम लोग सब भूखे भी मर सकते हैं. That the pigs are eating well so they can rule well. That the rations are still better than when हाँ वो यही कहा था, कम है तो क्या हुआ, फिर भी जोन्स उनसे तो हम लोग दे ही रहे ना, खाना तो दे रहे हैं ना, कम दे रहे हैं लेकिन खाना दे रहे हैं हम।
are the mandatory events that animals march and celebrate animal farm called? General assemblies, spontaneous demonstrating, speeding the flow, or pep rattles. बताओ मैंडेटरी सेलिब्रेशंस क्या होता है? देखो को होना ही होना है. जनरल असेंबली, स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पीडिंग द प्लाउ, वो काम करो ज्यादा, और प्रेप रैटल्स. आंसर इज बी, स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन. जब ना तब डेमोन्स्ट्रेशन करना है. Who runs against Napoleon as the election for the new president? This is the last chapter, mind you. Last chapter here. Who runs against Napoleon in the election for the new president? No one. Snowball, Squealer, the Raven. No one. कोई नहीं. What do the pigs send boxer when he collapses? कहाँ भेजता है बॉक्सर को जब बॉक्सर कोलैप्स कर जाता है? द ग्लू फैक्ट्री, वहां भेज देता है. द ग्लू फैक्ट्री, GLUE, glue. What do the pigs buy? जो बॉक्सर के मरने के बाद जो पैसे आते हैं, क्या खरीद लेता है वो लोग? बॉक्सर जो बिग गया उसके बदले में जो what did he get out of selling boxer? They buy more whiskey. Yes. ठीक है. This was up to chapter 9 done. 10 onward the next class. So these are the things which will help you immensely in your exam. आप सुन तो रहे ना, समझ रहे कि कौन सा सही आंसर हो.